Hello everyone, welcome to Super Kalam. So far, we have completed the most important events from 1600 till 1857 in modern Indian history. Modern Indian history revise कर रहे थे हम timeline के format में. Until 1857, we have covered all the important events, what happened, what were the important battles, what were the objectives, who won the battles. ये सब हमने notes बनाकर अच्छे से समझ लिया था. Now, from today, we are going to cover the events which happened after 1857. 1857 basically was the time period when nationalism was awakening in the hearts of Indians. Now we were getting united. 1857 failed, but militarily. But it also shook the British confidence because after 1857, the 1858 Act of Good Government of India was passed, where the East India Company lost all control over India and the British Queen directly stepped into the administration of India. The British government realized, the Queen realized that the East India Company basically is becoming more and more corrupt. And that is why they are not able to lead or administrate. And that is when the government of Britain they stepped in. Directly अब Queen India को rule कर रही थी 1857 के बाद. So we are going to start covering the major key events after 1857 in this session. Let's get started, everyone. I have a request from all of you. First request is you have to join the Telegram community. The link is given in the description box because I am making students participate in giving test, sharing their notes, covering important topics, practicing, revising on Telegram for free. So, in order to make sure that your revision goes on smoothly, because every day I'm giving daily targets, I'm making students write mains answer. So, if you want to be a part of it, then you should join the Telegram community. First step. Second step is after the end of this class, I want all of you to write pledge in the comment section. When you write pledge, I get to know how many of you are sincere and disciplined. हर दिन मैं देखती हूँ यही सेम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं क्लास में, तो आपकी सिंसेरिटी ऑटोमेटिकली मुझे एज योर टीचर पता चल जाती है. And the third important point is that whatever homework I'm going to give you in this session, I want all of you to submit that homework on the Telegram community discussion group. आप Telegram community join करोगे आपको discussion group मिल जाएगा. Comment section में आप अपना homework, अपना जो भी notes बनाए हैं, जो भी मैं आपको assignment दूंगी वो submit करोगे वहां पर. ठीक है? Everybody is ready? So these are the three things that you have to follow. Let's get started now. Now we are going to start with very important timeline. तो मैं इस पेज को क्लियर कर देती हूँ and let us draw the timeline over here. And now 1858. This is going to be the most important point. 1858 से शुरू करते हैं. In 1858 what happened? The Act of Good Government of India was passed. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Act of Good Government of India was passed. So now from 1858 onwards, we will see that the crown rule starts. The crown rule begins. This starts from 1858 onwards. Now crown rule का मतलब ये है कि from company raj we shifted to British crown. The administration shifted to British crown. 1858 में हमने देखा what happened. The 1857 revolt was crushed. Write it down. Revolt was crushed and Act of Government of India Act or Act of Good Government of India was passed. यहाँ पर what happened? East India Company was abolished. Please write it down. Then we will see that power was transferred. Power was transferred to British Crown. To British Crown. एंड यहां पर हम देखेंगे दैट क्वीन, राइट इट डाउन, क्वीन विक्टोरियाज proclamation was passed which said that there will be no interference in religion. Basically she wanted to win the trust of Indians. Then next, equal treatment. In the proclamation it was written equal treatment. ऑन पेपर ही था ये तो कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट. एंड नेक्स्ट, प्रिंसेस assured their territories. All the prince
They were assured their territories. It was said कि आपके territories आपसे कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि because the revolt of 1857 basically started because of doctrine of lapse and subsidiary alliance policies, right? मतलब the trigger points were those. Then later on the cartridge was the trigger point. So these were the proclamations listed in Queen's Proclamation. अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में क्या चेंज आया? सो यू विल राइट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, यू विल राइट that governor general was replaced by viceroy. Okay, then next was secretary of state position for India was created in Britain. Then next important change was Indian civil services were strengthened एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है. सो बेसिकली दिस फेज इज नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर plus starting of political science. But beneath the surface something else was brewing up, and I'm going to tell you what. Now let us understand what was brewing up. तो यहाँ पर हम देखेंगे वी आर गोइंग टू फेज 2. दिस was phase 1. तो ऐसा करती हूँ, आई जस्ट क्रिएट दिस logo and we will write phase 1. Now another logo which will say phase number 2. This is phase 2. What happened in phase 2? You will see that the socio-religious awakening started. Socio-religious awakening started in phase 2. And here we will also notice the early politics. यहीं पर early politics भी देखने को मिलती है. This phase is 1858 to 1885. 85 is the period when Indian National Congress was created. Now there were different reform movements in this phase. What were the reform movements? You will see Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy, right? You will see Arya Samaj. Who is responsible for creation of Arya Samaj? Dayanand Saraswati. You will see Aligarh movement over here. Aligarh movement कौन जिम्मेदार है? Sir Sayyid Ahmad Khan. And you will see the Theosophical Society by Annie Besant. All right. But why this phase is important? It is important because in this phase you will notice the spread of modern education. Then you will see this phase is important because it reformed the social evils, and it also created, write it down, it also created politically politically conscious Indians. All right. अब यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है इस फेज का? द रिजल्ट वॉज वेरी सिंपल. This phase basically highlighted the need for an all India political platform, which was Indian National Congress. Okay, so this is phase number 2. Now let's move to the next phase, that is phase number 3. अब phase 3 पे चले जाते हैं. So I will create phase 3 tag over here. You have to understand that studying modern history in phases is very important. Phase 3 basically refers to the birth of Indian National Congress, 1885 to 1905. You will see that Indian National Congress was founded in which year? In 1885. It was founded by the British ex-retired British civil servant A.O. Hume. And who were the leaders? Leaders were Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, and M.G. Ranade. These were 3 leaders founded by A.O. Hume. Why? So that the political voices of these leaders can be channelized. उनको एक मंच मिल जाएगा, platform will be given to them to channelize and be vocal about their political opinions. And these leaders were basically, who were they? They were moderates. Moderates क्यों बोलते थे इनको? Because they never believed in violence. They used several methods. What were the methods to protest against Britishers? Prayer, write it down, prayer, petitions, and resolutions or protests, and that too non-violent protests. 3 P's भी इसको हम बोलते हैं. Okay, and they used to say that we will do constitutional agitation. हम मारा धाड़ी नहीं करेंगे. We are not going to kill or beat anyone. We are going to do peaceful constitutional agitation. And what were the key demands that these guys raised? क्या key demands थे इनके? So we will write over here, write it down. The key demands of these leaders in this phase was, first is Indianization of services.
of services. Second, reduction in in military expenditure. Third, legislative reforms. Legislative reforms. But what was the problem in this phase? The problem was simple. The Britishers were not listening to them. The Britishers did not did not listen much. सुना ही नहीं ज़्यादा. That was the only problem with the moderates, that they were doing everything, but the Britishers were still not paying any heed to them. And that's when the next phase started, which was phase number 4. What was phase number 4? Phase number 4 was, write it down, the challenge, extremist challenge, and partition of Bengal. This is the phase 1905 to 1915. इस फेज में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है. पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905 by Lord Curzon. This is important. UPSC has asked a lot of times questions on it. And this phase is known as the phase of divide and rule. इसी को divide and rule का phase भी बोला जाता है. And here in this phase, we will see the rise of extremists, because what moderates were saying was not being listened to by the Britishers. Here the extremists come up. Who were the extremists? कौन थे extremists? तो उनका नाम भी लिख लेते हैं. The extremists were Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, and Bal Gangadhar Tilak. These were the extremists. And what was the slogan they were using? The slogan was स्वराज इज माई बर्थ राइट. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज, इसको तो मैं लेकर ही रहूंगा. एंड देयर वर डिफरेंट मूवमेंट्स विच वर लॉन्च्ड इन दिस फेज. व्हाट वर द मूवमेंट्स? स्वदेशी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. देन नेशनल एजुकेशन पे फोकस था, नेशनल एजुकेशन, एंड पैसिव रेजिस्टेंस. पैसिव रेजिस्टेंस, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है. ऑल राइट. बट इन दिस फेज यू सी द सूरत स्प्लिट. इसी फेज में आप देखते हो 1907 में होता है आपका सूरत स्प्लिट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, moderates versus extremist. These moderates and these extremists, they got divided in this phase because of their ideologies. All right. तो ये हो गए हमारे पहले 4 phases. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज. अब हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द नेक्स्ट फेज? हमने 4 फेजेस पढ़ लिए हैं, अब हम 5वां फेज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज नंबर 5. ओके, what happens here? This phase is guided by, or you can say that this phase basically is also famous for home rule and Gandhian entry. I hope that you are making notes alongside with me. And the time period here is 1915 to 1919. All right. अब इस फेज में क्या होता है? गांधी जी आते हैं इस फेज में. तो we will write over here Gandhi returns in this phase. यहाँ पर he does early experiments like चंपारण सत्याग्रह इंडिगो पेजेंट्स के साथ. Then Ahmedabad mill strike, he stepped in to solve it. Then Kheda Satyagrah, it was related to tax remission. Write it down. It was related to tax remission. It was related to mill workers, and it was related to indigo peasants. हमने indigo movement पढ़ा भी था in the last class, right? And then we have the, यहाँ पर हमारा home rule movement भी आता है. ठीक है, so write it down. Home rule movement. What happens in home rule movement? Bal Gangadhar Tilak plus Annie Besant, both of them participated in this home rule movement. What was the demand of this movement? The demand was simple: self government. स्वराज चाहिए था हमको within the empire. That means भले ही आप ब्रिटिशर्स हो, राज कर रहे हो, बट हम अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद फ्रेम कर सकें. ओके. एंड देन एंटर्स नेक्स्ट फेज विच इज फेज नंबर 6. फिर हमारे पास फेज 6 आता है. फेज 6 बेसिकली इज mass nationalism. It starts 1919 से 1927. ऑल राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया.
1919 में क्या होता है? 1919 is also known as, write it down, the watershed year. Here you will see the Rowlatt Act getting passed. Then you will see the Jallianwala Bagh massacre. And here there were different movements as well which took place. What were the movements? Non cooperation movement होता है यहाँ पर. The non cooperation movement 1920 से 22. And then we see it was linked with the Khilafat movement. The Khilafat movement. Now here we will see that Chauri Chaura incident took place which became violent. ये इसमें पुलिस स्टेशन जला दिया था, 30 से ऊपर पुलिस वाले लोग मारे गए थे. बिकॉज इट बिकेम वायलेंट, गांधी जी सेड वी आर गोइंग टू विड्रॉ इट. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सॉ सडन विड्रॉवल बिकॉज ऑफ दिस वायलेंट एक्टिविटी इन दिस फेज. फेज नंबर 6. ऑल राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. फेज 6 क्लियर हो गया सभी को. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फेज. अब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे. नेक्स्ट फेज बेसिकली इज फेज नंबर 7. व्हाट हैपेंस इन फेज 7? फेज 7 में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल. राइट इट डाउन. कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कुड बी सीन इन फेज 7 एंड साइमन गो बैक. साइमन गो बैक के नारे इस फेज में देखने को मिले. Here you will see 1927 to 1929. ओके, अब इसमें क्या होता है? साइमन कमीशन, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया. राइट इट डाउन. साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया इन 1927, जिसके अंदर देर वॉज नो इंडियन मेंबर. दैट इज वाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग. यू आर हियर टू ड्राफ्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन बट देर इज नो इंडियन मेंबर. सो बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज नेशन वाइड प्रोटेस्ट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. हियर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय dies. Again, mass protest happened. Here we see the coming up of Nehru Report 1928. Here Nehru ji demanded dominion status. Dominion status, that means you can still rule us, but we need to have a free hand in creating our own constitution, rules and regulations. You will see over here the Lahore session 1929. पूर्ण स्वराज देखने को मिलेगा यहाँ पर. वी विल सी पूर्ण स्वराज. 26 जैन वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, इंडिपेंडेंस डे. यहां तक पॉइंट क्लियर करना. ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपना. द नेक्स्ट स्टेज वुड बी फेज नंबर 8. इसके बाद आता है फेज नंबर 8. फेज नंबर 8 बेसिकली सीज सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस, दैट मीन्स पीपल वर बीइंग डिसोबीडियंट. एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो यहां पर आप देखोगे 1930 to 34. व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर फेज? यू विल सी डांडी मार्च. यहां पर इस फेज में आप देखोगे डांडी मार्च टेकिंग प्लेस, सॉल्ट सत्याग्रह. ठीक है, ये हो गया आपका डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह देखेंगे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यू विल सी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं. एंड इसी के बाद हमारा पूना पैक्ट साइन होता है विच गेट साइंड इन 1932. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. लेट अस ऑल्सो गो टू सुपर कलाम एंड सी व्हाट हैपेंड इन पूना पैक्ट. ठीक है, आस्क सुपर कलाम पे जाते हैं नाउ. तो यू कैन ऑन दिस ऐप ऑल्सो यू कैन हैव द AI असिस्टेंस. व्हाट हैपेंड इन पूना पैक्ट? Let us see what happened exactly in the Pune Pact, because ये जानना जरूरी है, right? Without this, it will be impossible for us to understand what happened actually and why it is important. So here in the Pune Pact, you will see British Prime Minister Ramsay MacDonald announced separate electorates for depressed classes. Mahatma Gandhi ji began indefinite fast unto death because he was not in favor of separate electorate, because it was a clear-cut divide and rule policy, ना, कि आप डिप्रेस क्लासेस के लिए, क्योंकि बेसिकली ही बिलीव्ड इट वुड परमानेंटली डिवाइड द हिंदू सोसाइटी अगर डिप्रेस क्लासेस के लिए आपने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाल दिया. एंड इट वाज साइंड बाय B.R. Ambedkar on behalf of the depressed classes and on behalf of Hindu leaders. Who signed it? This is very important. Madan Mohan Malviya ji signed it. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदू लीडर्स, हिंदू सोसाइटी के बिहाफ पे किसने साइन किया. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो वापस लेट्स गो बैक, वापस आते हैं. नाउ लेट्स गो टू फेज नंबर 9. अब ऐसा करते हैं, फेज 9 पे जाते हैं एंड फेज 9 में देखते हैं क्या हो रहा है. दिस इज
phase number 9. In phase 9 you will see provincial autonomy, and we will see Congress ministries coming up. Congress ministries. The year here would be 1935 to 1939. Now, what happens in this phase? We will see UPSC's favorite topic, that is Government of India Act. Government of India Act 1935. Here, what happens? Provincial, write it down, provincial autonomy. Provincial autonomy. Here, you will see federal structure was proposed. Federal structure proposed. एंड हियर यू विल ऑल्सो सी इलेक्शंस 1937 में जो हुए थे. ठीक है. कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस आफ्टर दिस इलेक्शन. ऑल राइट. देन कम्स नेक्स्ट फेज विच इज फेज नंबर 10. अब आता है नेक्स्ट फेज. फेज नंबर 10 आ जाता है. what happens in phase number 10? You will see over here the world war 2 and the final struggle. 1939 से 1945. Here the Britishers, write it down. These notes are going to help you a lot in revising entire modern history properly. Okay. Britishers drag India into World War 2. Here what happens? Congress resigns. यहाँ पर कांग्रेस कर देता है resign. What are the important movements that took place in this particular phase? Quit India movement 1942. INA, Indian National Army, was formed under Subhash Chandra Bose. And you will see 1946 में the Royal, this is important question, has been asked in prelims on this topic. Royal Indian Navy mutiny happened. तो ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं. देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. वी विल गो टू प्रीलिम्स PYQs एंड हियर वी विल सिलेक्ट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. लेट अस सी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. करेक्ट हो गया मेरा आंसर इसके अंदर. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इट वॉज आस्क्ड इन विच ईयर? 2024. ओके. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आई विल बी गिविंग यू अ टेस्ट लिंक ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट इन द कमेंट सेक्शन. प्रैक्टिस देम एंड टेल मी योर स्कोर्स. ठीक है. प्रैक्टिस करने के बाद अपने स्कोर जरूर बताना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज फेज नंबर, राइट इट डाउन, फेज नंबर 11. Phase 11 basically is the phase of independence. Write it down. It is the phase of independence and partition. 1946 से 47. Events क्या होते हैं इस phase में? The cabinet, write it down. The cabinet mission plan fails. Okay, it fails because India protested. Then communal violence होता है. Communal violence happens. देन माउंटबैटन प्लान आता है टू डिवाइड. राइट. माउंटबैटन प्लान यहाँ पर आता है. एंड व्हाट इज द आउटकम इन दिस फेज? इस फेज का आउटकम क्या रहता है? 15 अगस्त 1947 हमें मिलता है इंडिपेंडेंस. इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट हो जाते हैं मिडनाइट में. ठीक है. एंड दिस इज द कंप्लीट फेज वाइज टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ओके. अगर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर टाइमलाइंस देखें ना, इफ वी लुक एट द कोर टाइमलाइंस ओवर हियर, आई विल क्रिएट अनदर स्लाइड. ठीक है. अब यहाँ देखो तो वी हैव 1858. क्विक व्यू कर लेते हैं. क्राउन रूल आ जाता है 1858 से. देन 1885 व्हाट हैपेंस? INC आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड. 1905 व्हाट हैपेंस? बंगाल पार्टीशन होता है. राइट इट डाउन. बंगाल पार्टीशन. देन 1915 व्हाट हैपेंस? गांधी जी आते हैं. ठीक है. गांधीयन एंट्री. 1919 सॉरी, जलियावाला बाग मैसेकर हैपेंस. ठीक है. देन 1920 से 22 व्हाट हैपेंस? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैपेंस. 1930 व्हाट हैपेंस? डांडी मार्च होता है. डांडी मार्च. 1942 व्हाट हैपेंस? क्विट इंडिया मूवमेंट. 1947 इंडिपेंडेंस. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट इन योर रजिस्टर. इसका अपना नोट बना लो. ठीक है.
this timeline from yes the last class and this class is very very important to cover entire modern history revision. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एक एक पॉइंट रिवीजन आपकी बहुत इजीली हो जाएगी. Okay, and now I'm going to give you test links in the comment section and in the description box, and I want all of you to practice those questions and share your scores with me. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई रियली एंजॉयड टेकिंग दिस सेशन एंड आई होप दैट मैंने स्टार्टिंग में जो आपको स्टेप्स करने के लिए बोले थे आप उसको ज़रूर करोगे. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन.